हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर लर्निंग वीडियो। एंड आज हम लोग जानेंगे स्टॉक फॉरेक्स क्रिप्टो ऑप्शन ट्रेडिंग, विच वन इज सुटेबल, व्हाट इज़ द डिफरेंस और क्या सिमिलरिटीज है, ये सारे जानने की कोशिश करेंगे। और बेस्ड ऑन दैट आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपके लिए कौन सा अच्छा है, आप किस में ट्रेडिंग कर सकते हैं और किस में आप सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सब जानेंगे कि ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग कैसे करेंगे। ठीक है, व्हाट इट इज़ एंड हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। ओके, पहले जानेंगे व्हाट इज स्टॉक ट्रेडिंग। स्टॉक ट्रेडिंग बेसिकली क्या है? बाइंग सेलिंग शेयर्स पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज, जैसे कि बहुत सारे कंपनीज है ना, जैसे अदानी, HCL, IT से रिलेटेड, एनी सेक्टर। सो देर आर सो मेनी सेक्टर इन इंडिया। जैसे कि टॉप 50 करते हैं तो निफ्टी 50 बोलते हैं, 100 है तो निफ्टी 100 बोलते हैं, राइट। सो इसी तरह का जितने सारे कंपनीज है, कंपनी शेयर्स डायरेक्टली बाइंग एंड सेलिंग, दैट इज कॉल्ड स्टॉक ट्रेडिंग। So how you are going to do that? Based on the company fundamentals, earnings and news. Suppose कोई कंपनी फंडामेंटल्स मतलब जैसे कि उसका रेवेन्यू अच्छा है और उसका द मैनेजमेंट इज़ वेरी गुड एंड दे गॉट ए क्लियर कट विजन्स and over a period of time, like 5 year 10 year, where they wanted to take their company to next level, right? ये सब कंपनी फंडामेंटल्स बेसिकली। ठीक है ना, अर्निंग्स ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर टू ईयर अर्निंग्स एंड एनी न्यूज। सपोज देर इज अ चेंज इन मैनेजमेंट, so then there may be some problem with the shares, right? So these kind of things you can trade। कहाँ कहाँ है वो आप ट्रेड कर सकते हैं? डिफरेंट एक्सचेंजेस आर काइंड ऑफ एन NSE, BSE, NYSE, NASDAQ, etc. If you're looking for any foreign stocks. So basically, this is a pictorial representation how you are going to do. So basically, there is a fight between buyers and sellers for the stock, and most of the time, what people used to do, they wanted to remain invested over a period of time, right? It's a long-term investment. Everyone kind of very optimistic, and the investment mainly consist of buying. Most, if you'll see, 90% of the people, they are planning for a long-term investment. Say 10 years back, 20 years back, those who invested and the discipline in the investment they made. So over a period of time, they'll be kind of making a lot of money. तो इसके ऊपर आपका आता है कि स्टॉक ट्रेडिंग आप करते हो तो दीज आर द इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। सो इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट एंड ट्रेडिंग इज डिफरेंट। Trading that you are going to do day to day basis, daily basis, right? So again, when it comes to daily basis, you will have a buyers and seller fighting, and you'll be kind of taking buyers money and sellers money, basically over a period of time swapping. When you'll be getting on cheap and when you are getting on high, you are going to sell. The seller is going to sell and the buyers is going to buy. So basically, it's kind of who is going to make money and who is having more power. The market trend will be deciding on that. I hope ये very fundamental thing आप समझ गए होंगे. If you want in details, maybe आप comment section में please write some comments, and you can also email me, so that based on your feedback, I can make a detailed video. This is basically a fundamental video. Okay. Next comes what is forex trading. So forex tradings are nothing but all the forex pairs. Suppose Euro USD, USD INR, USD JPY. So similar to that, we are going to trade. So this is basically a very largest, across the globe people used to trade, and most liquid financial market. So absolutely, it operates 24 by 5, and decentralized market, and influenced by most economic indicator, interest and rates, and also geopolitical movement, and say Trump bola tariff. So it's going to shake so many markets, right? So basically, this is how the forex trading work. Again, the buyer and seller, and buyer and seller will be involved. So इसमें क्या है आपका, सपोज आपका अकाउंट में $10 है, ठीक है। आप अगर यूरो USD आप ट्रेड कर रहे हो,
और सपोज आपका अगेंस्ट ट्रेंड आपने ट्रेड ले लिए, तो अगेंस्ट ट्रेंड मतलब आपको लॉस देखने को मिलेगा। अगर आपको लॉस देखने को नहीं मिलेगा, तो क्या करेगा, ये आपका अकाउंट को ब्लो कर देगा। ठीक है, इट विल पीप इन टू योर अकाउंट एंड वॉट एवर नेगेटिव थिंग दैट इज काइंड ऑफ you are making loss, that will be eating away your account, so your account will be blown. Okay, so this is what the forex trade. Whereas in stock, like whatever amount you invested, it will be kind of negative, or it will go in negative, right? आपका लॉस हो जाएगा, बट यहाँ पे आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा। ठीक है ना? सो सो दैट्स हाउ इट्स वेरी वेरी रिस्की मार्केट। And next comes what is crypto trading. So crypto, as you know, crypto is kind of alternative currency which is across globe we are using, like euro, USD, etc., etc. So crypto is absolutely unregulated market, and mostly Bitcoin, Ethereum, Libra, so many digital currencies are there, and they are basically decentralized and blockchain based. Blockchain is the technology where you do have absolute security, and it kind of creates a token for each and every currency, and this has got a unique ID. So that means everything that you're going to store, it's in a blockchain token. Okay, it's absolutely secure currency, and digital. There is a no physical currency on that, right? And available 24 by 7, and this is very very highly volatile. When I said highly volatile, आप अगर लेंगे BTC का एक ट्रेड लेंगे, तो आपका नेगेटिव चला गया तो सीधा माइनस में आपका आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा। ठीक है ना? तो दिस इज वेरी वेरी रिस्की ट्रेड। सो अनलेस अंटिल यू हैव अ नॉलेज, यू शुड नॉट ट्रेड। हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कौन like whoever the people can trade what trading, like crypto or stock or Bitcoin, समथिंग लाइक दैट। और ये कौन सा एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं? बाइनांस एंड कॉइनबेस एटसेट्रा एटसेट्रा। So this is again high volatile, high risk, and again it's a buyer versus seller fight. Like absolutely market sentiments and demand of these cryptos will be most responsible for the volatility of those cryptos. Okay, now comes everyone's favorite, that is option trading. So options are basically, the derivatives based on the underlying asset. Say अदानी पोर्ट्स बाय कर रहे हैं, या अदानी का कोई भी बाय कर रहे हैं, राइट? उसका अंडरलाइंग जो भी एसेट्स है, दैट इज ऑन टॉप ऑफ इट यू विल हैव those derivatives. Okay, so you'll be basically trading on those derivatives. Okay, but underlying assets are kind of such stocks only, right? So these instruments are, some of the stock may have option um, instrument, or some of the stock might not have option instruments. Okay, so mostly it involves calls and puts with strike price and expiries. So this is going to expire each week or each month across the globe. So this is one of the highly um, risky trading, and mostly used for hedging or speculation. So market speculation is kind of negative, and also you'll be kind of based on the market speculation you are going to trade. Okay, I hope you understood. These are this is the video I am kind of creating in order to showcase what is the difference between all this and what are the similarities, what is the how this is what specific trading that is going to help you, so that you'll clearly know कि आप किस में अच्छे हो. Suppose आप very very attentive and risk taker and very focused, then you can make lots of money in option trading. And आप suppose long term investment करना चाहते हो, and over a period of time, and temporary market fluctuation से आपको कोई problem नहीं है, then you can do a stock investment.
एंड इंट्राडे एवरीडे सपोज आप करना चाहते हो, देन यू कैन डू फॉर अ स्टॉक ट्रेडिंग. Okay, so and crypto you have a very high appetite on high volatility and all, so you can go for um, crypto trading. Similarly with the forex trading. So end of the day, it depends like how much money you have, how much time you have, and how much knowledge you have. Okay, keep this thing very clear. You can have knowledge, you may not have money. You have money, you may not have time. So these are kind of interdependent variables. So based on that, it will decide how we are going to make money in the market. Okay, you have a knowledge. So if you look at all these trading technologies, uh, mostly based on प्राइस एक्शन. ओके, सो सारे कोई प्राइस एक्शन आपका काम करते हैं, बट कभी कभी बहुत सारे मार्केट मैनिपुलेशंस होते हैं बाय द बिग इंस्टीट्यूशंस और बिग ऑर्गेनाइजेशंस. ओके, बिग इंस्टीट्यूशंस बेसिकली, स्पेशली इन केस ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग एंड ऑल, राइट. सो इसीलिए आपको पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा विथ डेफिनेट रिस्क रिवार्ड फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग. ठीक है, आई होप आप समझ गए हो what are the different options for trading and different type of trading, and which is beneficial for you. So similarly, आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉल पुट, एंड दैट इज ऑल्सो a big fight between the seller and buyer, and you can see this hourglass. So time is the key. So you are saying time is the money, so same is valid here. Time is the money, and also again time will also decay in option, so which is very risky. Now let us discuss about key similarities. आपको ये सारे के सारे में similarities क्या है? सारे के सारे all involve speculation on price movement. Okay, so speculations like, okay, will it go up, will it go down? So absolutely speculation. Okay, and it can be traded using the technical and fundamental analysis. As I mentioned, fundamental analysis like companies fundamentals, and the technical analysis like looking at RSI, volatility, etc. So you can trade, and all these are accessible via different brokers and exchanges, and require understanding on the risk management. So सारे के सारे जो ट्रेड आप करेंगे, आपका only one thing that will make you rich is the risk management. अगर आप ठीक से रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तो आप कितना भी तोप हो, आप प्राइस एक्शन कितना भी अच्छे से जानते हो, आपने तो डायरेक्शन में तो ले लिए, बट एग्जैक्ट टाइम में आप निकले नहीं, बैक आ गया, तो फिर आप सारे के सारे लॉस कर लेंगे. आई होप सबके साथ ऐसा हुआ होगा मल्टीपल टाइम्स, राइट. सो दीज आर द की सिमिलरिटीज. नाउ हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट की डिफरेंसेस क्या है. बेसिकली मार्केट आवर्स में क्या डिफरेंसेस है. आपका स्टॉक्स जो है 9:30 AM to 4 PM. Basically, this one I can aggregated with worldwide 9:30 AM to 4 PM. And Forex is 24 hours, 5 days a week. Crypto is 24/7 trading, and option is kind of during the regular stock market hours. So that's how we are going to trade. So these are the key differences, and some more key differences on the volatility and liquidity. आप देख सकते हैं stocks like moderately volatile and high liquidity, and forex is high liquidity and low volatility. So basically, once you kind of took a trade, is very low volatility. So you can see these specific differences, guys. ये देख के आपको पता चल जाएगा आप कौन सा कैटेगरी में फिट बैठेंगे. Whether you wanted to trade in stocks, whether you wanted to trade in forex, or in crypto, or in options. Okay, so crypto क्या है, very high volatility, very varying liquidity. Also ये पूरा का पूरा मार्केट एकदम स्पेकुलेशन में चलता है. कभी चलता है तो 100 पॉइंट्स एकदम से मूव होता है, 1000 पॉइंट में मूव होता है एक साइड में, और कभी कभी चलता है तो कुछ भी मूव नहीं होता. ठीक है ना.
और नेगेटिव में भी पूरा चले जाता तो पूरा इट्स एब्सोल्युटली लाइक ए टाइड, high waves and deep waves, and the swing will be very very high. So you should be absolutely very careful while trading in crypto. उसी तरह का ऑप्शन भी है, आप अगर थोड़ा सा लेट कर देंगे तो आपका डीके में सारे पैसा उड़ जाएगा इफ मार्केट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, और साइड साइड और रेंज बाउंड, राइट। और इसमें सारे आपका ग्रीक्स आ जाएंगे, अल्फा बीटा थीटा थीटा गामा वेगा। सो दिस इज एब्सोल्युटली very very what is called knowledge. You must be having a proper knowledge of all these things in order to trade in options, you know. And differences on risk and leverages. Stock is kind of moderate risk, and some leverages, some margins provided by some of the brokers. And forex is kind of high leverage. It's up to 100:1. And crypto is high risk and high leverage, varies by exchange. Some gives you 100, some gives you 200, some gives you 500:1. So it depends on the different brokers across the globe. And options are defined risk, very complex payoffs structures. You have underlying assets, right? And the movement of the premium depends on alpha, theta, gamma, vega, etc., etc. So this is how the option world works. And what kind of you know what kind of trading is suitable for you? So stocks, if you want long-term investor or a swing traders. Long-term means in years you are going to invest, or swing traders in months or weeks. So you can think of. And forex is kind of day trader or global macro traders. Crypto is high risk speculation and tech savvy traders. Like when I said tech savvy, is AI driven or machine learning driven, or some may be taking manually. And people used to build the technical indicators based on those technical indicators. They only take like 2 to 3 pips, and in a seconds, microseconds, of time, and frequently throughout the day, right? It's absolutely automated. And some takes over a period of time, like 3 minutes or 5 minutes time frame, or 15 minutes time frame, over a period of time, right? So that's how this gives you this allows you to make a lot of money. And option, like experienced trader seeking leverage and hedging. And experienced trader, when I said, they must be knowing the absolute price action, and keep in mind about the time, keep in mind about the volatility in the market and the range bound in the market. ऑप्शन में आप जब ट्रेडिंग करेंगे, आप पूरा का पूरा अटेंटिव रहना पड़ेगा थ्रू आउट द टाइम। सपोज ऑप्शन में आप 9:15 में एंट्री किए हो, 3:15 तक आप कर रहे हो, तो आप पूरा अलर्ट रहना है, क्योंकि थोड़ा सा मिस किए, आप कहीं इधर से उधर गए, अगर अगर रिवर्सल हुआ तो मौका नहीं देगा आपको निकलने के लिए मार्केट से। जब तक आप निकलेंगे तब तक 50 से 100 पॉइंट भी डाउन हो सकता है, और जब प्रॉफिट देने का टाइम आता है तो 100 से 50 to 100 पॉइंट्स अप भी हो सकता है विद इन नो टाइम। सो you should be absolutely efficient enough, experienced enough to become a option trader, ठीक है ना? So okay, summary and final thoughts. So how you are going to trade and which market you are going to choose. So based on your goals and risk profile, आप अपना मार्केट सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड कोई भी, देखिए, आप अगर कभी भी शुरू करते हैं ना, कोई भी चीज़ पहले की स्टॉक से शुरू कीजिए, क्योंकि स्टॉक में क्या होता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको एक आइडिया भी होगा, और आइडिया होने के बाद आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस भी होगे, तो धीरे धीरे आपका रिस्क मैनेजमेंट भी स्ट्रांग होगा, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप
रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, एंड यू कैन स्लोली शिफ्ट टू द फॉरेक्स, क्रिप्टो एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका लर्निंग, आई थिंक इट विल बी कंटिन्यूस लर्निंग। आप अगर प्राइस एक्शन का सब कुछ जानते हैं, एंड आज सपोज आप ट्रेड करने बैठे हैं, देर इज़ नो गारंटी दैट आज से ही आप एवरीडे प्रॉफिट करना चालू कर देंगे, तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन फॉर श्योर। सो यू शुड बी वेरी वेरी कॉशियस, एंड लर्निंग इज़ द की। एवरी डे आपको लर्निंग मिलेगा। आज आपने रिस्क मैनेजमेंट किए हैं, रिस्क मैनेजमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ट्विक भी करना पड़ेगा। आज 1:2 लिए, कल 1:3 लिए, किसी में क्रिप्टो में 1:10 भी हो जाता है, ऑप्शन में 1:5 1:10 भी हो जाता है, और कभी कभी 1:1 ही होता है, कभी कभी 1:1 हो भी नहीं भी हो पाता है। ठीक है ना? सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का लर्निंग कंटेंट में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत बहुत सारे लर्निंग कंटेंट में लेके आने वाला हूँ। ठीक है, आपको थोड़ा सा भी कुछ नॉलेज मिला होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय टेलीग्राम चैनल। मैं वहाँ पे एवरीडे मार्केट सेंटिमेंट्स और मार्केट रिलेटेड स्टफ, जितने भी इम्पोर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह होता है, मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। And also, if you like, I have a premium indicator. You can subscribe to my premium indicator as well. Okay. So thank you all. Thank you for watching. Bye bye. See you next in another learning video. Thanks. Bye.